Hello everyone, welcome to the WikiTrade. Now this session is for our daily market analysis and this is 3rd March 2025 and हिंदी दर्शकों के लिए आप सभी को विकीट्रेड पर स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो है डेली मार्केट एनालिसिस का। और हिंदी दर्शकों के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो सभी टाइम डिस्क्रिप्शन पर टाइम स्टैम्प पर जाइए और उसी टाइम स्टैम्प के हिसाब से हम आगे से हिंदी का सेशन शुरुआत करेंगे और पहला सेशन हमारा इंग्लिश सेशन होगा। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर आवर इंग्लिश सेशन. In daily market analysis, we are going to first Nifty 50 and we will first analyze that whether we have analyzed correctly or not, whether market performed according to our analysis or not, and where to uh, take the entry and exit. Okay. So what we have analyzed in the previous session that if Nifty sustains above 22,200. So this is the point now. It is 22,200 and uh, market opens here today. Okay, this is the March 3rd March. This is the first means 3rd March. This is today's candle. So Nifty opened today in slightly gap of opening happened, and in 5-minute candle, it is our rule that we must have to leave the first two candles. So after leaving first two candles, the second candle closes at 22,188. So above 22,200. So after this candle, after our first two candle, Nifty never touched this scenario, that is 22,200. So we have to leave the upper part. Now going to the, if Nifty goes below to 22,100. So this one is 22,100. So if Nifty goes below 22,100, we should have gone in the selling side, and for a target of 22,000 is our first target. So at 9:45, Nifty touches this. Nifty goes down our first selling zone, that is 22,100. Okay. So in this closing, if any case of means aggressive trader, he or she must have taken the entry here. Okay, so entry here, but it was our first target, that is 22,000, and market never touched our first target 22,000. Market goes low, very low. It is the lowest point 22,004. Just for we have remained shortage of 4 points, market remains sideways here. Okay, so in case of aggressive trader, just we have just fallen for 22 sorry 4 points. In case of a our moderate trader, okay, safe side trader, here she must have to wait for a pullback, as this pullback entry is very popular, and personally I also choose that pullback entry. So Nifty goes below to this level, that is 22,012. Okay, just 12 point far from our first target. Then it again goes back in the upper momentum. It touches our the selling zone side, where we have to take entry. So after it touches this side, then a negative candle happen, red candle happen. We must have taken the entry in the trade here at the closing point of this red candle, that is 22,059. So we have got around 50 point movement in case of a average trader, in case of a moderate trader. Then after Nifty goes here sideways, and it gets the rejection and goes in the upper movement, and above this resistance point, above this 22,100 point, market remains sideways and closes at showing no momentum after this point. So this is how Nifty 50 acted today. Now we are going for our tomorrow's session. Next session, what will be our target and support? Okay. So we have already drawn the resistance point, and it is the support point. So if Nifty sustains above 22,260, sorry. So if Nifty sustains above 22,000. Uh, uh, 260, then we should go for buying with a target for, this one will be our first target 22,430. Then our next target will be this one. Our next target will be 22,650. So we'll get this two level of target, as market remaining for 2 days continuously. We have seen that market has some momentum, so we have taken these two target in case of buying.
But if Nifty falls down below this 22,000, we should go in the selling side, and our target should be 100 point, that is 21,900 and 21,870. And remember, 21,870 is our next very means strongest support zone. If market falls, it has to touch that level 21,870. So this one is for Nifty 50. It is the 15-minute candle. And if we go to the day chart, see, this was our most important support zone, 22,280, and after that it is 21,870. Okay, so Nifty remains again today's after today's candle formed here. Nifty again remains the below to this support zone, that is 22,270. So it is now getting an indecisive candle. We cannot say anything above 22,270. We should go for we should think we should means plan about our buying side in bullish momentum. But till then, we should remain out of the trade in case of positional market. Then we should go for our Nifty Bank. So Nifty Bank, what happened according to our analysis? So in previous session, we have analyzed that if Nifty Bank sustains above 48,650. So what is our 48,650? It is the market open here, slightly gap up like the Nifty 50, and it opened at 48,478. So Nifty Bank never touched 48,650, neither in the means opening of the market nor at the closing of the market, not in between. So we should have leave the first two candles. Got it. And it never touch our buying zone section, so we should go for the what we analyzed in case of sale. So below 48,000, this one is our 48,000 where, okay, now this is our 48,000. I must draw this. Okay, so this is 48,000. If Nifty Bank goes below 48,000, we should go for our selling side with a target of 47,950. So it is our 47,950. Just a 50 point. Okay, then our next target will be 47,800. Okay, this is 47,800. So just a 50 point target in the first case, we have already achieved, and many times it is not one time. We have already achieved many times this 50 point candle, and it was a very reasonable, very small amount, as we expected that if market goes down such a heavy from what is the closing of this previous market, closing was 48,262, and if market goes from below 48,000, that means already 200 point. So we expect that 50 point target will be a great also. So this 50 point target we have achieved many times, but our second target, second reasonable target, which was 47,800, we never touched that. We never actually, we didn't go even near to it section. So apparently there is today's trade in both in case of Nifty 50 and Bank Nifty. It performed according to our analysis, but we have not achieved our target. Okay, we have just shortfall for such a few points. And Nifty Bank likely to Nifty 50 also it gets a rejection from the very lowest point, and it goes somehow in the upward momentum, but then till the market close it remains sideways. And no, actually it was likely a no trading day for today, from the mid of the market after 1 p.m. it remained like no trading day. So now if we go to the 50-minute chart for our next session, uh, if Nifty Bank
remains if Nifty Bank sustains above 48,310, 48,310, then our target will be this one, 48,550, and our next target will be 48,900. This is our two targets. And if Nifty Bank falls down below this point, below 47,600, below 47,760, we should go for sale, and again we should go for sale likely to a 100 points target, that is 47,660, 47,560, like this. Now if we go to the daily market chart, what happened? Again, this is our most important support zone, that is 47,760, and steel market Nifty Bank upholds above this support zone. So, if market if Nifty Bank breaks this support zone, then we can go for a heavy drastic fall up to a target of 46,400. Otherwise, we should expect that market will be sideways. Market will be range bound in between 50,600 to 47,000. 800, likely 800 points. It will go uh, it will be traded in a range bound in between this 600 to 800 points. So this was all about our daily market analysis. So अभी टाइम है हमारा हिंदी दर्शकों के लिए। हम पहले जाएंगे एज यूजुअल हमारा निफ्टी 50 की तरफ, कि हमने जो पिछले सेशन में एनालिसिस किया था उसी के हिसाब से आज मार्केट परफॉर्म हुआ या नहीं, पहले हम वो तय करेंगे। तो हमने बोला था कि अगर निफ्टी 22,200 के एबोव ऊपर सस्टेन कर गया तो हमको बाइंग साइड पर जाना चाहिए, और मार्केट खुला यहाँ पर थोड़ी सी गैप अप पर। हमारा जो रूल है ये है कि हम पहले दो कैंडल में हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो पहले दो कैंडल पर एंट्री छोड़ देंगे, एंड पहले दो कैंडल को ही हम छोड़ देंगे बिना ट्रेडिंग के। ये हम देखेंगे कि ये है 22,200, और निफ्टी 50 ये जो 22,200 हमारा बाइंग जोन है, इसको कभी टच ही नहीं किया, तो हम अपर साइड को छोड़ देंगे। फिर नीचे वाले साइड पर आ जाएगी, तो अगर निफ्टी 50 22,100 के नीचे फिसला तो हमको सेलिंग साइड पर जाना चाहिए, और हमारा टारगेट होगा 22,000। ये है हमारा, ये जो लाइन है हमारा ये है 22,000। तो मार्केट यहीं पर फिसला। और अगर आप एक रिस्क वाला ट्रेडर हो गए, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर होते, तो यहीं पे इसी क्लोजिंग पर, दैट इज 22,866 पर 86 पर आप एंट्री ले लेते, और हमारा आज का जो सेशन था ये हमारा जो फास्ट टारगेट 22,000 इसका टच नहीं किया। हमारा जो लोएस्ट था आज जस्ट 4 पॉइंट ऊपर 22,004 तक ही गया। तो आपको लगभग 70 पॉइंट का एक टारगेट मिल गया होता। अगर नहीं भी, आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर भी नहीं है, हमारा जो, अगर आप एक मॉडरेट ट्रेडर है और हमारा जो पॉपुलर एंट्री का जो प्लानिंग है वो जो पुल बैक प्लानिंग है, यहीं पर पुल बैक दिया, इसी को टच किया, फिर से नीचे आया, तो इसी कैंडल, इसी रेड कैंडल के नीचे पर, इसी रेड कैंडल के क्लोजिंग पर आप एंट्री ले लेते, दैट इज 22,059। तो लगभग आपको एक 50 पॉइंट्स का तो एंट्री, 50 पॉइंट्स का आपको रिजल्ट मिल गया, और यहीं से साइडवेज रह गया, और इसी के ऊपर रिजेक्शन दिया मार्केट ने कुछ न्यूज़ की वजह से। ओके, जो ईडी ने छोड़ दिया प्रॉपर्टी, ओके, इसी की न्यूज़ की वजह से मार्केट में थोड़े से उछाल आया, और मार्केट जाकर लगभग 1 PM के बाद से ये मार्केट साइडवेज रह गया, और साइडवेज में ही क्लोजिंग रह गया। तो मार्केट, हाँ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने के लिए कोशिश की थी, पर न्यूज़ आ गया तो क्यों, हमारा जो हिसाब से थोड़ा सा 4 पॉइंट ऊपर ही वो ख़त्म हो गया और अपने हिसाब से चला गया। तो इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट कैंडल चार्ट की तरफ, कि कल के सेशन में हमारा जो एनालिसिस क्या होगा। हमारा जो एनालिसिस है कि निफ्टी 50 अगर 22,260 के ऊपर सस्टेन कर गए तो हमको बाइंग साइड पर जाना चाहिए, और हमारा पहला टारगेट होगा 22,430, और इसका ऊपर टारगेट होगा 22,650। आज मैंने ये इतना बड़ा बड़ा टारगेट क्यों दे रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम आ गया है। लगभग 2 दिन से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट बेरिश मोमेंटम पर तो है, पर साइडवेज नहीं है मार्केट। हाँ, कुछ मोमेंटम मीन्स दिखाई देता है मार्केट में। नहीं तो मार्केट अगर ऊपर नहीं गया, नीचे फिसल गया, तो
इसके नीचे 22,000 के नीचे हमको सेलिंग साइड पर जाना चाहिए और वहीं से फिर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर हम चलेंगे। ओके, बट हमारा जो नेक्स्ट जो बड़ा सा सपोर्ट जोन होगा वो होगा 21,870। अगर मार्केट फिसल गया तो 21,870 का टारगेट हमको दिखाई देना पड़ेगा। हमको हम देख सकते हैं। और ये है हमारा डेली चार्ट निफ्टी 50 का। हाँ, ये हम देख सकते हैं कि हमारा जो पिछले बार का जो रेजिस्टेंस फास्ट रेजिस्टेंस है, बड़ा सा रेजिस्टेंस 22,275, मार्केट अभी तक इसको क्रॉस नहीं कर पाया और ना ही नीचे की तरफ कुछ ज़्यादा भी फिसला। ओके, 21,870 है हमारा एक ग्रेट सपोर्ट जोन। तो इसी के रेंज में ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसको तोड़ता है ऊपर के लेवल से 22,270 को, फिर हम बाइंग का प्लान कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद आएंगे हम निफ्टी बैंक की तरफ। ये है 5 मिनट चार्ट। जो पिछले बार हमने एनालिसिस की थी वो थी कि निफ्टी बैंक अगर 48,650 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये है हमारा मीन्स मार्केट का ओपनिंग ओपनिंग कैंडल, 5 मिनट कैंडल। जो इसका हाई है 48,574। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी बैंक आज 48,650 हमारा जो बाइंग जोन है उसको टच भी नहीं किया। तो हम सीधे चले जाते हैं हमारा सेलिंग साइड की तरफ। अगर निफ्टी बैंक 48,000 से नीचे फिसला तो हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 47,950, 47,800, 47,650। सो ये है 48,000। ये है हमारा पहला टारगेट 47,950। ये है हमारा दूसरा टारगेट 47,800। तो ये जो 48,000 ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन था। ओके, ये 15 पॉइंट का हमने एक मीन्स एग्जाम्पल के लिए ये एक टारगेट लिए थे 50 पॉइंट का। वो बहुत बार हमने अचीव की, जहाँ कहीं भी कोई भी ट्रेडर ये 50 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर लेता। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मीन्स टारगेट था वो जो था 47,800, इसको हमने आज टच नहीं कर पाए लाइक निफ्टी। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन हमारा इतना खास भी नहीं था। ओके, मीन्स मार्केट परफॉर्म कोशिश कर रही थी कि हमारा एनालिसिस के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए, बट थोड़ा सा न्यूज़ आया और न्यूज़ के हिसाब से ही मार्केट आज घूम गया। ओके, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कभी कभी होता भी है। और 1 बजे के बाद वो निफ्टी 50 की तरह ये भी साइडवेज चला गया निफ्टी बैंक हमारा, और साइडवेज में ही क्लोजिंग दे गया। कोई भी मोमेंटम नहीं था आज। तो इसके बाद आएगी हमारा जो 15 मिनट चार्ट की तरफ। 15 मिनट चार्ट पर हम कल का सेशन के लिए टारगेट और सपोर्ट देखेंगे। तो 48,310 इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक सस्टेन कर जाए तो हमको बैंक साइड पर जाना चाहिए और हमारा जो पहला टारगेट होगा 48,550, देन टारगेट होगा 48,900। पर अगर नीचे फिसल गया, नीचे से 47,760 के जो 760 है ये हमारा पहला टारगेट होगा। और हमको ये वाला जो है 47,950, 47,950 के नीचे अगर मार्केट फिसल जाए तो हमको बाइंग सॉरी सेलिंग के लिए जाना चाहिए। सॉरी, 47,900, 47,900 के नीचे हमको सेलिंग साइड पर जाना चाहिए और हमारा जो टारगेट होगा 47,760। और इसके बाद हम 100-150 के टारगेट के हिसाब से, 100 के टारगेट के हिसाब से चलना चाहिए। और आएंगे हमारा डे चार्ट की तरफ से, तो ये हमारा है 47,750, 760। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट उसके ऊपर से ही सस्टेन कर रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहीं से कुछ रिजेक्शन दे दिए और हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 50,600 और 47,800, इसके बीच से ही मार्केट ट्रेड करता रहे, इसी दो रेंज के बीच से। तो ये था हमारा आज के लिए डेली मार्केट एनालिसिस।